हार्ड। इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने बताया कि सैलेरियो और सेलेनो दोनों एंटोनियो के घर जा रहे हैं उसको कंफर्ट, कंसोल और स्ट्रेस करने के लिए। अब आगे देखो, यह बेलमंट का दृश्य, पोर्शिया का शानदार महल है। एक नया विवाहेक्षु जिसका नाम है द प्रिंस ऑफ एरागन ऑफ स्पेन, एक नया विवाहित जिसका नाम है द प्रिंस ऑफ एरागन ऑफ स्पेन पोर्शिया के घर पहुंचता है सही टोकरी चुनने के लिए। जैसे ही द प्रिंस ऑफ एरागन ऑफ स्पेन पोर्शिया के महल पहुंचते हैं, पोर्शिया उनका स्वागत करती है। द प्रिंस ऑफ एरागन ऑफ स्पेन एक टाल, लंबे और आकर्षक व्यक्तित्व के राजकुमार हैं। ये टोटली व्हाइट हैं, सर से लेकर के पांव तक मोतिया सफेद हैं। जितनी इनके बाल सफेद हैं उतनी इनके स्किन भी सफेद है। यह एक हीरो की तरह दिखाई देता है और यह हीरो के फ्रेम में बिल्कुल उपयुक्त बैठता है। जब पोर्शिया द प्रिंस ऑफ एरागन ऑफ स्पेन से बात करती है तो उसे पता लगता है कि द प्रिंस ऑफ एरागन ऑफ स्पेन अपनी सुंदरता पर उनको नाज है, यानी कि वह घमंड करता है अपनी सुंदरता पर। इसलिए बिना देर किए हुए पोर्शिया द प्रिंस ऑफ एरागन ऑफ स्पेन को इजाजत देती है सही टोकरी चुनने के लिए। तो पोर्शिया के साथ द प्रिंस ऑफ एरागन ऑफ स्पेन उस हाल में पहुंचते हैं। जैसे वह हाल में प्रवेश करते हैं, उन्हें देखते हैं कि 3 टोकरियां एक लंबी मेज पर हाल के बीचों बीच रखी हुई हैं। पोर्शिया द प्रिंस ऑफ एरागन ऑफ स्पेन को बताती है कि इन तीनों और उन्हें पता लगता है कि एक सोने की है, एक चांदी की है और एक शीशे की है। पोर्शिया द प्रिंस ऑफ एरागन ऑफ स्पेन को बताती है कि इन तीनों टोकरियों में से किसी एक टोकरी में उसकी फोटो है। जो इंसान उस टोकरी को चुन लेगा जिसमें उसकी फोटो है, उसी से पोर्शिया शादी करेगी। अब द प्रिंस ऑफ एरागन ऑफ स्पेन को सही टोकरी का चुनाव करना है। सोने वाली टोकरी पर लिखा है कि वह इंसान जो मुझको चुनेगा वह चीज पाएगा जिसको बहुत सारे लोग चाहते हैं। चांदी वाली लिखा है वह इंसान जो मुझको चुनेगा वह चीज पाएगा जिसके वह योग्य है। और शीशे वाली लिखा है कि वह इंसान जो मुझको चुनेगा सारी चीजें खो देगा जो उसके पास हैं। क्योंकि प्रिंस ऑफ एरागन ऑफ स्पेन को अपनी सुंदरता पर नाज है, वह ये सोचते हैं कि पोर्शिया केवल उनके लिए बनी है, वह ही पोर्शिया के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट है। इसलिए बिना देर किए हुए, बिना किसी लॉजिक और रीजनिंग के द प्रिंस ऑफ एरागन ऑफ स्पेन चांदी वाली टोकरी पकड़ते हैं और उसका ढक्कन खोलते हैं। द प्रिंस ऑफ एरागन ऑफ स्पेन को पता लगता है कि उस टोकरी में पोर्शिया की फोटो नहीं है, उसमें एक छोटी सी कागज की पर्ची है। उस कागज को खोलकर पढ़ते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उस पर लिखा है कि वे लोग जो सांसारिकता के पीछे भागते हैं क्षणिक खुशी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से द प्रिंस ऑफ एरागन ऑफ स्पेन सही टोकरी चुनने में असफल हो जाते हैं और खाली हाथ, भारी हृदय के साथ वहां से तुरंत गायब हो जाते। यह अगला दृश्य है। तो ध्यान से शुरू करते हैं बेटा। हमने इसके पहले बताया बेस सैलेरियो एंड सेलेनियो
Salenio and Salenio, both of them are going to the house of Antonio to console, comfort, and solace him. आगे देखिए. Now it is the scene of Belmont. Belmont का दृश्य है. It is the beautiful and magnificent palace of Portia. A new suitor of Portia, the Prince of Aragon of Spain, arrives at the palace of Portia so that he may choose the right casket containing her photograph and he may be able to have her hand as his wife. As and when the Prince of Aragon of Spain arrives at the house of Portia, Portia welcomes him in. Portia is the number. Portia welcomes him in. The Prince of Aragon of Spain is the man of tall and attractive personality. He is totally white from top to bottom. His skin is as white as his hair. He looks like hero. All the heroic qualities get settled in the personality of the Prince of Aragon of Spain. He is fit in the frame of a hero. When Portia talks with the Prince of Aragon of Spain, so she comes to know that the Prince of Aragon of Spain is the man of proud. He is proud of his handsomeness. उसको अपनी सुंदरता पर क्या है? नाज. So without delay, Portia grants a permission in the favor of the Prince of Aragon of Spain to choose the right casket containing her photograph. With Portia, the Prince of Aragon of Spain enters the hall which is built in the palace of Portia. As and when the Prince of Aragon of Spain enters the hall, he comes to know that there are 3 caskets lying on a long table in the middle of the hall. One is made of gold, second is made of silver, and third is made of lead. Portia tells the Prince of Aragon of Spain that one of those caskets contains her photograph. The man who will choose the right casket containing her photograph will be able to have her hand as his wife. Now, the Prince of Aragon of Spain has to choose the right casket containing the photograph of Portia. The Prince, on the golden casket, it is written that the man who chooses me will get what many men desire. On the silver one, it is written that the man who chooses me will get what he desires. And on the lead one, it is written that the man who chooses me will give and desire what he has. The Prince of Aragon of Spain is the man of proud. He is proud of his handsomeness. He thinks that he is made for Portia. He is the deserving candidate for Portia. So without any logic and reasoning, the Prince of Aragon of Spain clutches the casket made of silver. Opening the silver casket, the Prince of Aragon of Spain comes to know that there is no photograph of Portia. There is a small chit in the casket. Opening the chit, the Prince of Aragon of Spain reads it. In the chit, it is written that those who run after shadows get only shadowy happiness. Those who run after shadows get only shadowy happiness. In this way, the Prince of Aragon of Spain fails to choose the right casket containing the photograph of Portia, and with empty hand and his heavy heart, the Prince of Aragon of Spain immediately disappears from the sight. उस दृश्य से क्या हो जाते हैं? गुजर जाते हैं. कुछ समझ आया? एक बार फिर सुनते हैं. ध्यान सुनो. Salenio, इसके पहले मैंने बताया थोड़ा. Salenio and Salenio, both of them are going to the house of Antonio to console, comfort, and solace him. अब आगे देखिए. Now it is the scene of Belmont. It is the beautiful and magnificent palace of Portia. A new suitor of Portia, माने विवाहित. A new suitor of Portia, the Prince of Aragon of Spain, arrives at the palace of Portia. As and when the Prince of Aragon of Spain arrives at the palace of Portia, she welcomes him in. The Prince of Aragon of Spain is the man of tall and attractive personality.
His skin is as white as his hair. He looks like hero. All the heroic qualities get settled in the personality of the Prince of Aragon of Spain. He is fit in the frame of a prince. He is fit in the frame of a hero. वह एक हीरो के फ्रेम में उपयुक्त बैठता है. When Portia talks with the Prince of Aragon of Spain, so she comes to know that the Prince of Aragon of Spain is the man of proud. He is proud of his handsomeness. उसको अपनी सुंदरता पर क्या है नाज. So without delay, Portia grants a permission in the favor of the Prince of Aragon of Spain to choose the right casket containing her photograph. With Portia, the Prince of Aragon of Spain enters the hall. And when he enters the hall, he comes to know that there are 3 caskets lying on a long table in the middle of the hall. One is made of gold, second is made of silver, and third is made of lead. Portia tells the Prince of Aragon of Spain that one of those caskets contains her photograph, and the man who will choose the right casket containing her photograph will be able to have her hand as his wife. Now the Prince of Aragon of Spain has to choose the right casket containing the photograph of Portia so that he may be able to have her hand as his wife. On the gold casket, it is written that the man who chooses me will get what many men desire. On the silver one, it is written that the man who chooses me will get what he deserves. And on the lead one, it is written that the man who chooses me will give and hazard what he has. The Prince of Aragon of Spain is the man of proud. He is proud of his handsomeness. He thinks that he is the deserving candidate for Portia. He is made for Portia. So without any logic and reasoning, the Prince of Aragon of Spain clutches the casket made of silver. Opening the silver casket, the Prince of Aragon of Spain comes to know that there is no photograph of Portia. In the casket, there is a small chit. Opening the chit, the Prince of Aragon of Spain reads it. In the chit, it is written that those who run after shadows get only shadowy happiness. In this way, the Prince of Aragon of Spain fails to choose the right casket containing the photograph of Portia, and with his empty hand and heavy heart, he disappears. The Prince of Aragon of Spain immediately disappears from the sight. दृश्य क्या हो जाते हैं, गुजर जाते हैं. इतना बाकी हम कर